हेलो 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 हेलो, कैसे हो बड़े दिनों बाद? हेलो टू एवरीवन। काफ़ी टाइम बाद आए लाइव। कैसे चली पढ़ाई वढ़ाई? क्यों? हाउस योर स्टडी? तभी ठीक है, अब ठीक है। टुडे इज़ बेटर कंपेयर देन टू यस्टरडे। नाउ गुड। और वैसे भी क्लास तो लेनी पड़ेगी ना यार, तबीयत का क्या, बनती बिगड़ती रहती। जय श्री राम to all of you. Welcome to again Origin live classes to all of you. 5 people are watching, so please like the stream. Please like the stream and do subscribe if you visit first time our channel. Okay. So as a thumbnail, today we discuss last live class on Saturday. So we already discussed continuity introductions and few questions. Today take one or two questions, then after we discuss about discontinuity because of his JEE mains and advance. Many times JEE asking for discontinuity problems and गले में फंस रहा है कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है गला सूखा हुआ है। आज तो मतलब घर पे ही था मैं, तो तब भी सोचा कि चलो ठीक है, बट ठीक है। तो last lecture we clearly continuity introduction completely. So today we discuss about discontinuity and continuity few questions, then after we discuss about differentiability. Okay, yes. Jai Sri Ram bro, Jai Sri Ram, how are you? Jai Sri Ram to all of you. Jai Sri Ram, Jai Sri Ram. Okay, so let me start. I am fine bro, I am fine, I am fine, I am fine, I am fine. Yes, I am fine. So question is discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function. Okay guys, so we can start the class. Okay. Yes, I am fine bro, I am fine, I am fine. So question is discuss the continuity. Fx is equal to limit n tend to infinite log 2 plus x minus x to the power 2n sin x. Okay, sin x, and divide by 1 plus x to the power 2n at x is equal to 1. At x is equal to 1. At x is equal to 1. Yes, at x is equal to 1. At x equal to 1. Okay. So first we check continuity. Okay, continuity, this question. So our question is this. First of all, simple question. We can first find the value of x is equal to 1 and the value of f of 1.
So we can find easily the value of f of 1. F of 1 is equal to log 2 plus 1 minus x to the power. So y or x 1 to the power 2n and sine 1. Okay. And divide by 1 plus 1. It means 2. Okay. So there is a log 3 minus sine 1 and divide by 2. So function is continuous, is not continuous, it is not, we cannot decide the value of f1. We find LHL and RHL. We can find LHL and RHL. We should find, not can. Actually, continuity problems, when function is continuous, so RHL and left hand limit and right hand limit both are equal. So in this condition, find the value of f1 clearly, no issue, no any type of issue. Okay, but real problem is limit n tend to infinite. And one more thing important, x to the power 2n. Just a important case of this question. You think, sir, easily find f of 1. Okay, no issue. X equal to 1, fix x, put x is equal to 1, so we can find easily answer. But many times log n tend to infinite. So when you put n tend to infinite, so there is one more problem. What problem? Actually, x to the power 2n. 0 and infinite. When 0? When x less than 1. When x less than 1. And when x greater than 1. When x greater than 1. So infinite. Because of, you know very well, if x value less than 1, it means fraction value 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, and degree is increasing. The value of x is less than 1 and the degree is increasing order 1, 2, 3, 4, 5, so infinite. So value minimize, that value is minimize, then that value is minimized, so answer will be 0. Okay, so and next one, if value x is greater than 1, it means 2. I am just taking a 2. So when you take a 2, so 2 the power 1, 2, 2 the power 2, 4, 2 the power 3, 8, 2 the power 4, 16, 2 the power 5, 32. So there is multiple of 2, there is infinite value. So why I am telling you, just an important point, x to the power 2n. So first clarify x to the power 2n. Then after we can check LHL, RHL. Then after we can check LHL and RHL. Okay. So Namah Shivaya, bacha. So x to the power 2n we can discuss very easily. Okay. Now find LHL. LHL. So LHL means left hand limit. Left hand limit means limit h tends to 0, log 2 plus 1 plus h, 2 plus 1, LHL 1 minus h, okay, 1 minus h, and this part will be 0, because of you take x less than 1, and you know very well x less than 1 value is 0, so this portion will be 0, so sign completely 0. Okay, so x less than 1, first case is x less than 1, so x less than 1 means 1 minus h, of course, so this part will be 0, and divide by also 0, so 1. So there is log h tends to 0, log 2 plus 1, 3, log 3. So LHL is log 3 and this function is log 3 minus sine 1 by 2. So both are not equal. So if both are not equal, so how can you define the function is continuous? The function is continuous. So this answer is not continuous. I think you understood what I am saying. That is the question. Question is in front of you. Question is this, and question is saying simply f1 is equal to log 2 plus 1 minus 2 the power 1 power 2 and sine 1 upon 2. So log 3 minus sine 1 upon 2, it means f of 1 value. Then we discuss less than 1 and greater than, because of RHL and LHL. RHL means x greater than 1, LHL means x less than 1. So x less than 1 means 0%, because of n tend to infinite, and then more x greater than 1 means x greater than 1 and tend to infinite, answer always will be infinite. So when we take first case x less than 1, it means LHL. So LHL means limit 2 plus 1 minus s, next portion 0, because of x to the power 2 and 0. So answer will be log 3. So it is not necessary you find the RHL, otherwise
Okay, no issue. Question is very simple. So the answer of this question, function is discontinuous. Function is discontinuous. Thank you so much, guys. Now we can take a next question. Next question. Next question. Question is fx is equal to a to the power 2 greatest integer function of x plus fractional part of x, okay, minus 1 divide by 2 greatest integer function of x and plus fractional part of x, okay, और there is log a, okay, यहाँ पे है x not equal to 0 and x equal to 0. Function continuous or not continuous we decide after solve, we after decide. So please guys like the stream, then we can continue this question, okay. फैन चला लेते हैं, गर्मी लग रही है. Okay. Okay, so this is one issue. What is the issue? A to the power, it means exponential function. Please guys focus on board what I am saying. I am telling you simple words, my simple words. A to the power something, it means a to the power function of x, it means exponential function. First clear, justify. First introduction of this function, a to the power x. A to the power x means exponential function, okay. Second point is greatest integer function. This function is a greatest integer function and this function is a fractional part of x. So what I am saying guys, I am telling you fractional part of x always equal to x minus greatest integer function. I think you know very well this point, okay. So now put this value in this function. So function we can change. Function is it 2 times greatest integer function of x and plus x. Sir, what is this? Put the value of greatest integer function of x. Put the value of greatest integer function of x. You get, when you put this value in here, so you get this, and minus 1 divide by same thing for here. So same thing when you put here, so same thing, so 2 is not coming, only simple greatest integer function of x minus x plus x and log a. So actual question is this, okay. So I think guys you understood very smart way, okay. Now so it means the value of f of 0 is equal to log a, f of 0 is equal to log a. If RHL is this and LHL is this, so answer will be आयुष. नमस्कार सर जी, नमस्कार बेटा, नमस्कार, कैसे हो, क्या हाल चाल है. So f of 0 is equal to log a. So it is fixed. The value of limit f of 0 is equal to log a. Now we find LHL and RHL. So okay, we can find first LHL. First we can find LHL. You know very well in LHL x replace a minus h. You know very well x replace x minus h. But sir, good shabash. X minus h, okay. Put the value of x, and one more thing, x replace 0 minus h because of you check continuity as x equal to 0. Yes, thank you so much. हाँ बेटा, तबीयत ख़राब है मेरी कल से, थोड़ा सा कल तबीयत ख़राब थी, ख़राब आज भी है, और आज तो मैं शायद कहीं जा भी नहीं पाया हूँ, तो ओके है, बाकी पढ़ा रहा हूँ, बाकी ठीक है. सर यशपाल और पीयूष नहीं लेते क्लास आजकल. यार पता नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि वो लास्ट टाइम से मेरी कोई बात नहीं, उन्होंने मैसेज के रिप्लाई नहीं किया, तो फिर मैंने भी नहीं किया. उनको मैंने मैसेज किया था पीयूष को, पर पीयूष ने कोई रिप्लाई नहीं किया, तो फिर मैंने भी नहीं किया. ठीक है, हो सकता है बिजी हूँ, क्योंकि इस टाइम पे स्कूल में प्रेशर ज़्यादा चला रहा है ऐसे भी. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना फोकस करो.
चलिए आ जाओ जल्दी से। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, सो x रिप्लेस 0 माइनस एच, x रिप्लेस 0 माइनस एच। सर 2k soon, हाँ मे बी because of 1.7 we have, so 1 or 2 month maybe 2k complete. So x replace 0 minus, okay, now we can solve the question. Okay, so LHL, limit h tends to 0, limit h tends to 0, a to the power greatest integer function 0 minus h and plus x, x means 0 minus h, 0 minus h, and divide by greatest integer function 0 minus h and minus plus 0 minus h, and there is minus 1, there is minus 1. Okay, okay. So guys, please like the stream, please first of all like the stream. Okay, so limit h tends to 0, limit h tends to 0. One more thing I am telling you, a to the power greatest integer, this is, it is a GIF, greatest integer function, greatest integer function, and you know very well greatest integer function means greatest integer function of x always belongs between two integers and takes a minimum value. So guys, 0 minus h, and you know very well h tends to 0, it means h is not 0, maybe after few times, after few minutes h tends to 0 once h equal to 0. So this time minus h, so it means h is a very minimum value between minus 1 to 0, 0 to 1. So minus h means this gives you minus 1 minimum value. So if h is negative, so h negative belongs to minus 1 to 0. So minimum value a to the power minus 1, a to the power minus 1, there is 0 minus 1 and divide by 0 minus h, 0, sorry, there is minus 1 and this is also is 0. So answer will be 1 by a minus 1 minus, so answer will be 1 minus 1 by a. अब तुम देख सकते हो, you can see very clearly f of 0 value log a and LHL is 1 minus 1 by a, 1 minus 1 by a. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राज कैसे हो? So there is f of 0 value log a and this value is 1 minus 1 by a. So clearly this function is discontinuous. Clearly this function is discontinuous. Clearly this function is clearly discontinuous. I hope guys you understood very clearly. Okay, now we can take a next question. Okay, so clear or not, first of all I am asking to all of you, please tell me, reply clear or not. If clear this, so please do the comment Jai Sri Ram. If clear this, so please do comment Jai Sri Ram. Guys, clear or not? If clear this, so please do comment Jai Sri Ram. Otherwise we can take a start a new question. Okay, no issue. Okay, so this is very important point. Okay, now next point is continuity in closed interval, continuity in closed interval. Okay, it's a real line, okay, it is a real line, continuity in closed interval, it is a real line, and it is very simple, not a very tough point. It's just for knowledge, you remember this thing what I'm saying, you always remember. So I'm taking the value a and b, it means this way and this way, you know very well. The value between a and b, x belongs to a to b, okay, x inside of this line. So this point, okay, so left a, so before a nothing, interval only a to b, interval is only a to b, it means this portion go to left 2 point and this from right 2 point, go from left 2 point and come from right 2 from, it means left hand limit means a minus h, okay. RHL not necessary, okay. Same thing, you come from right 2 point, so it means RHL means b plus h, it means LHL not necessary,
unnecessary. So what I am saying, guys, it's just a very simple problem, just a very simple problem, just a very simple problem. Okay, so nothing for JEE Mains and advanced, nothing. Oh, no, it is not important, just for knowledge, just for knowledge. But CBSE students, you can remind always when interval given and asking find the continuity of this question in interval. I am taking one example. I am taking just an example, sin x plus cos x. Okay, I am taking example sin x plus cos x. Okay, point is 0 to pi by 2. I am taking the point 0 to pi by 2, 0 to pi by 2. Okay, 0 to pi by 2. I am taking the point 0 to pi by 2. Find the continuity, find the continuity. Okay, so there is no any point taking a particular point. This question not taking any particular point, so we can find LHL and RHL. So this point is LHL and this point for RHL. So LHL means limit h tends to 0, h tends to 0, sin 0 minus h plus cos 0 minus h. Okay, so sin 0 minus h means sin 0 value 1, sin 0 value 1 plus cos 0, sorry, sin 0 0, sorry, sin 0 value is 0 and cos 0 value 1, cos 0 value 1. So LHL is 1. Now find RHL. RHL means pi by 2 plus h. So limit h tends to 0, sin 0 plus, sorry, pi by 2 plus h and plus cos pi by 2 plus h. Okay, sin 90 plus theta cos theta, sin 90 plus theta cos theta. So it is again cos 0, cos h, cos 0 and cos 90 plus theta minus sin theta, so minus sin 0. Okay, cos 0 1 and plus 0. So answer will be 1. 1 function is continuous. It's just a very small point. That's just a very small point for learning. Okay, so you can learn easily ki if a given interval or a closed interval a to b, so that function is continuous from left to left hand limit, from to right to left, right to point. It's just a right hand limit. And many students ask, sir, why not you find the open interval? Open interval में you बहुत अच्छे से तुम जानते हो कि वो पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ए और बी एग्जिस्ट ही नहीं करते. जब पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करते तो तुम कैसे निकालोगे? तो तुम वहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं बता सकते, लेकिन डिफरेंसिबिलिटी बता सकते हो. कंटिन्यूटी नहीं बता सकते, लेकिन वहाँ पे तुम क्या बता सकते हो? डिफरेंसिबिलिटी बता सकते हो. ठीक है, तो जब डिफरेंसिबिलिटी पढ़ेंगे तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी कैन select our next point. Now we select next point. Next point is discontinuity. Very important point, discontinuity. Okay, discontinuity, guys, discontinuity. So what is the mean of discontinuity? Discontinuity, you know very well. Discontinuity means, if you're asking, sir, what is the discontinuity means? So discontinuity, you know very well what is the mean of discontinuity. A function is not continuous, so it is that function is called discontinuity. Okay, what I am saying, guys, I am saying very simple words. Discontinuity means a function is not continuous, so this function is discontinuous. That is called discontinuity. But what I am saying to you, there is two types of discontinuity. First type is removal, and second type is non-removal. Okay, second type is non-removal. First type is removal and second type is non-removal. समझना मेरी बात पहले, ठीक है? समझना मेरी बात पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. I am telling you, please do understood. Okay, so I am telling you first, not a different question from continuity. A function is not continuous, so you say simply function is not continuous, function is discontinuous. But types of discontinuity, actually point is types of discontinuity. Actually point is types of discontinuity. Actual point is types of discontinuity. Actual point is types of discontinuity. Okay, actual point is types of discontinuity. So types of discontinuity means two types of discontinuity always, removal and non-removal. Removal and non-removal. So first we discuss about removal. Removal. Okay, first we discuss about removable. Removable भी हमारे पास two types. There is two types of removal. First is missing point. And second is oscillated नहीं. Missing point, oscillated नहीं होगी. I think oscillated नहीं होगी.
आइसोलेटेड, हाँ आइसोलेटेड होगी, बिल्कुल होगी, आइसोलेटेड आइसोलेटेड आइसो, ऑसिलेटेड नहीं होगी, आइसोलेटेड होगी, ऑसिलेटेड नहीं होगी, आइसोलेटेड होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज मिसिंग एंड सेकेंड इज आइसोलेटेड, ओके। फर्स्ट इज मिसिंग एंड सेकेंड इज आइसोलेटेड, okay. Missing, what is the mean of missing? Okay, I am telling you, we have a graph, this graph, okay, this graph, okay, what I am saying. So there is a gap, it is a mixed point, it's just a mixed type, missing point, it's just a missing point. Missing point means something is missing, and just you take a example, you have a 1000 rupees, okay, you have a 1000 rupees, okay. You have a 1000 rupees, okay. 1000 rupees means 10 note, 10 नोट, मतलब 10 रुपए के नोट हैं यार, क्या गरीबी वाली बातें कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। यू हैव ए 1000 गड्डी, एक गड्डी है नोट की, ठीक है ना। आपने रात में काउंट करके रखी तो वो आपके 1000 रुपये थे, लेकिन जब आपने सुबह काउंट किया, और एक चीज़ और थी, एक पॉइंट और था मेरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस क्वेश्चन को उस एग्जाम्पल को लेकर के। मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूँ कि आपके पास 1000 की गड्डी थी, और उस 1000 के नोट की गड्डी की जो सबसे खास बात है कि सारे नंबर के जो सीरियल थे वो 1 से स्टार्ट थे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 999 1000, ओके। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग, okay, clear or not? So this point is very clearly, okay. So what I am saying, guys, okay, so number start from 1 2 3 4 5 6 to dot 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 100, okay. When you 1000, sorry, when you wake up in the morning, so few numbers are missing, few numbers are missing. It means imagine 567 number and 786 number are missing, okay. 567 and 786 missing, 567 and 786 missing, okay. Ab just a point 567 and 786 is a missing, okay. So when you wake up in the morning and you find the missing, okay. Same in mathematics, I am taking just an example. fx is equal to x square minus 9 divided by x minus 3. It's just a missing point discontinuity. Why? Because if you choose 3, so function is discontinuous. It means you delete 3 miss, you miss the 3. आपने 3 मिस कर दिया, आपने जो 3 का खेल था वो क्या कर दिया आपने, मिस कर दिया। तो यहाँ पर भी वही कहानी है कि यहाँ पे आपने 3 को क्या कर दिया, मिस कर दिया। तो सेम थिंग किसी ग्राफ के लिए अगर हम हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो उसको हम बोलते हैं मिसिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मिसिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसिंग पॉइंट बोलते हैं। समझना मेरी बात पहले, उसको हम बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर और नोट? गूगल पे डाल के देखो ना, एक बार गूगल पे डाल करके देखो ना, पता चल जाएगा यार। मैं भी थोड़ा सा क्या है कि इस चीज़ के बारे में थोड़ा कम नॉलेज रखता हूँ। एक बार कैटेगरी में एक बार अपने आप SC BC आप देख लो। महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र से हो ना, तो SC BC OBC में आते हैं, स्टेट वाइज आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र में था, पढ़ाता था महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर भी बहुत सारे, अगर महाराष्ट्र के हो तो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे थे जो SC BC में आते थे, फिर वो OBC में चले गए थे। तो वो सेंट्रल पे ही होता है, टेंशन ना लो, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे ही होता है, टेंशन ना लो, सेंट्रल लेवल पे ही होता है, सेंट्रल लेवल पे ही होता है। सो प्लीज़ गाइज, like the live stream first of all, please like the live stream and share with your friends, share with your WhatsApp, share in WhatsApp please guys, okay. Okay, so there is a missing point, there is a point is miss. Which point? 3. You miss the 3 point. Clear or not? I am taking one more example. Let's say x square minus 6x plus 5, okay. So there is x minus 2, okay, there is x minus 2. So same thing, you cannot take 2, x minus 2, x not equal to 2. It's just a missing point, okay. Second is isolated. Please guys,
do focus. Second is isolated. It's just a missing point. Now I am taking isolated. Isolated means greatest integer function of x type functions. Isolate means greatest integer function of y. Thanks यार, ये तो मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को गाइड करना, ठीक है। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हो, टेंशन नहीं है, ठीक है। आइसोलेटेड की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट आइसोलेटेड, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइसोलेटेड, सो isolated means greatest integer function type. I am taking the greatest function graph just like this, okay, just like this. So you know very well, graph continuous from there to there, but after this point again miss, isolated, again miss, then graph continuous, then we miss, then continuous miss. So this type function is in missing point, isolated. Where is isolated? So I think clear, okay, clear. So when polynomial and denominator not equal to 0, so it is a missing, and greatest function type functions, so it is isolated, okay. So always remember this point, always remember all of you this point, it is a very important point, okay. In JEE means many time asking such types of problems, you can solve PYQ. When you solve the PYQ, so you can meet, okay. Now second is non-removal. Now second point is our non-removal. Okay. अब ये नॉन रिमूवल कैसी होती है, चलो इसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं कि नॉन रिमूवल भी कैसी होती है, ओके। तो मैं तुम्हें जरा नॉन रिमूवल की बात करता हूँ, तुमको समझाता हूँ कि नॉन रिमूवल का मतलब क्या है, ओके। इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में फेविकोल लगा हुआ है, इमेजिन करो कि तुम्हारे हाथ में क्या लगा हुआ है, फेविकोल लगा हुआ है, ठीक है। इमेजिन कि तुम्हारे दोनों हाथों में फेविकोल लगा हुआ है, गीला है, सूखा नहीं है, ठीक है ना, गम लगा हुआ है, गम, ठीक है ना, फेविकोल लगा हुआ है, दोनों हाथों में फेविकोल लगा हुआ है, ठीक है, और गीला है, सूखा नहीं है, ठीक है ना। अब समझना, अब मैं जस्ट समझा रहा हूँ तुम्हें, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझना, ठीक है ना। समझना मेरी बात पहले कि दोनों हाथों में गम लगा हुआ है, ठीक है ना, और तुमको छोटी सी थर्माकोल की बॉल, आप जानते होगे, छोटी सी थर्माकोल की बॉल, ओके, तुमको हाथ में दे दी जाए, एक हाथ में पकड़ा दी जाए, ठीक है ना, एक हाथ में पकड़ा दी जाए। अब समझना, तुम्हारा जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जो राइट साइड है वो राइट हैंड लिमिट है, और जो बॉल है वो पॉइंट है, वो क्या है, पॉइंट है, ठीक है। तुम उस बॉल को हाथ से रिमूव नहीं कर सकते, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, तुम उस बॉल को हाथ से रिमूव नहीं कर सकते अपने दूसरे हाथ से। अगर सोचो कि इस हाथ से निकाल के इस हाथ से फेंक दें तो वो बॉल इस पे चिपक जाएगी। समझना मेरी बात पहले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब तुम इस बॉल से निकालोगे तो इस हाथ में चिपका लोगे, इससे निकालोगे इसमें चिपका लोगे, इससे निकालोगे इसमें चिपका लोगे, इसमें चिपका लोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उसको बार बार इस हाथ से, लेकिन आप उसको रिमूव नहीं कर पाओगे, जिसको बोलते हैं नॉन रिमूवल, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन रिमूवल। मेरी बात समझ आ गई होगी। यानी कि तुम RHL तो निकालोगे, लेकिन वो जो पॉइंट होगा ना f ऑफ a, वो किसी ना किसी साइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब मेरी बात समझ आई कि नहीं? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपसे बात की है मैंने, मैंने आपसे बात की है क्या, कि नॉन रिमूवल का यही मतलब है कि आप वो पॉइंट जो है वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है ना। तो वो भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है फाइनाइट, पहला क्या होता है, फाइनाइट। दूसरा होता है इनफाइनाइट, और तीसरा होता है ऑसिलेट। ओके। नॉन रिमूवल होती है 3 टाइप की, फाइनाइट, इनफाइनाइट और ऑसिलेट। अब फाइनाइट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब ये है कि लिमिट फाइनाइट होंगी, एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी। समझना, RHL और LHL एग्जिस्ट तो करेंगे लेकिन वो क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। समझना मेरी बात पहले, RHL LHL एग्जिस्ट तो करेंगे, RHL LHL exist but not equal, please do understood, okay, but not equal, okay. And one more thing, that point f of a always with RHL or always with LHL. Just imagine the value of RHL is 2, the value of RHL any function is 2, okay, the value of LHL is 1,
is 1. So maybe the value of f of, okay, हम a पे check कर रहे थे, f of a is 2. Maybe the value of f of a is equal to 1. Maybe the value of f of a is equal to 2. The value of f of a is equal to 1. So finite value means where RHL, LHL exist but not equal. And the value of f of a is equal to 2, okay, or LHL 1, f of a is equal to 1. So I think you understood very simple language, very simple theory, फेविकोल theory. वो गाना नहीं है एक चिपका ले सैया फेविकोल से, तो वही है, वो जो पॉइंट है हमारा वो गाना गा रहा है, मेरी फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकोल से, है ना, बड़ा अच्छा गाना है, मैं सुनता हूँ कभी कभी, मन करता है तो कभी कभी सुनता हूँ, जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तब मैं उस गाने को सुनता हूँ. चलो अब सेकेंड पॉइंट इज इनफाइनाइट. ओके, अब इनफाइनाइट का मतलब क्या है? अब ऑब्वियस ऑफ कोर्स यू clarify with name infinite. So what is the meaning of infinite? You know, limit, at least one 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 limit is, at least one limit is infinite. Infinite. Okay, it means maybe RHL infinite, LHL finite, or both infinite, both, okay, or both infinite, both are infinite, at least one. You know very well what is the meaning of at least. At least means at least one, at least one. Clear or not? Clear? Okay. So f of a is equal to 1. Okay, so finite and infinite limit clear, very clearly. Okay, now next is oscillate. So what is the mean of oscillate? Oscillation means you know very well. What is the mean of oscillation? Oscillation means a point, you know very well, just a pendulum. Pendulum always move from this to this. Okay. Okay, so moving from this point to this point, continuous. ऐसे look that. So that is oscillations. Clear or not? Oscillations. Clear or not? So oscillation means you know very well. Just a y is equal to many functions. Signum function is oscillate function because of 1 and minus 1. Just a oscillation. Okay. One more function, sine 1 by x, cos 1 by x, at x equal to 0, at x equal to 0. So just a non-removal, discontinuity, okay, just a non-removal discontinuity. Give me 1 minute. यार बड़ा खतरनाक जुकाम हो जाता है कभी कभी. अरे हट जा भाई, क्या समस्या है तारी? Okay. So oscillation, so you know very well x equal to 0. So this function is oscillate between -1 to 1. This function oscillate between -1 to 1. Clear or not? This function oscillate between -1 to 1 continuously. -1 to 1. So you know, remember what? When function is fx is equal to
x to the power m sin 1 by x. So always telling m always greater or equal to 1, m always greater or equal to 1, otherwise function is discontinuous, otherwise function is discontinuous, otherwise that function is discontinuous. So this is the reason oscillate, otherwise this function is non-removable discontinuity. So in JEE questions gives a question and asking, एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली में क्या होता है कि आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा. मैं आपको अभी एक बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, JEE वालों ध्यान से समझना, कि वो आपको एक fx तो दे देगा, वो आपको एक क्या दे देगा, fx तो दे देगा, और कह देगा एक क्वेश्चन दे देगा fx आपके सामने, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा. पहला कर देगा कि कंटिन्यूअस, पहला कर देगा कंटिन्यूअस, सेकंड डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज सॉरी, पहला ऑप्शन तो हो गया 1. सेकंड ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूअस. थर्ड हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और जो फोर्थ हमारा है, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस. फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस. सो देयर इज 4 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस फॉर ए क्वेश्चन. ओके, सो देयर इज सिलेबस इज वेरी बिग ऑफ मैथमेटिक्स, बट IIT क्या करे यार, उसको भी तो सब चीज़ के बारे में नॉलेज समझनी कि आप पढ़ने में कैसे हो. ठीक है, चलो आ जाओ. सो ये हमारी नॉन डिफरेंशियबिलिटीज़ हो गई. ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे fx इज इक्वल टू mod of x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Okay, and divide by x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Okay, this function is a fx. This function is discontinuous, confirmed because of signum function. This function is discontinuous, it's confirmed because of signum function. Okay, this function is discontinuous because of signum function. Okay, so he asking discontinuous point. He asking for discontinuous point. Okay, no issue. You can factorize. So when you factorize, so factor always x minus 1, x minus 2, x minus 3. Okay, international equation you know very well. So there is this types of factorization. Okay, so x minus 1, x minus 2, and x minus 3. So it's a function. Fx is equal to. Okay, no issue. We can solve easily. There is first point is x less than 1. X less than 1 means negative, both negative. So all parts will be negative. Okay, please understood. Negative and negative. So negative plus minus. It means minus upon minus. नीचे से कोई मतलब ही नहीं, डिनोमिनेटर से आपको कोई मतलब ही नहीं है. So there is minus 1. Second portion is greater than 1 and less than 1. Greater than 1 and less than 1 and less than 2. So positive, negative. So negative, positive. So it means plus 1. Next point is greater than 2 and less than 3. So positive, negative. It means negative. X greater than 3 means all positive. Greater than means all positive. So it means 1. So there is 1, 2, 3. There is 1, 2, 3 point non-continuous point. Okay, this point is discontinuous point. So many time question asking from like this. Many times he ask the question from this point, find the discontinuous point. So please don't forget this types of problems because of very important, very important this types of problems for you. So I think you understood what I am saying. Clear or not to all of you? First to tell me clear or not. चलो ठीक है, तो ये हमारी कंटिन्यूटी थी, ये हमारी क्या थी, कंटिन्यूटी. ठीक है, तो अभी कंटिन्यूटी पे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे कल. ठीक है, कंटिन्यूटी पे कल हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि अभी थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं है. ठीक है, कल से क्लास को हम थोड़ा बढ़ाएंगे और अपनी जैसे रेगुलर क्लास ऐसी हमारी. अभी मैं घर गया था ना, घर से आने के बाद मैं टोटली डिस्टर्ब हूँ पूरी तरीके से, मेरा टाइम टेबल पूरा बिगड़ा हुआ है. तो अभी 183 चैलेंज वीडियो इसलिए आप आ रहे हैं क्योंकि 2-4 वीडियो पहले से पड़े रहते हैं उसमें, तो इसलिए आप आ रहे हैं. लेकिन अभी थोड़ा सा तबीयत में आज सुधार था, लेकिन अभी शाम से बिगड़ी हुई है. गले में पता नहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं एक वो कहते नहीं जैसे
सूख जाता है। जैसे मतलब सर तो मैं MSCET का फॉर्म फिल करूँगा तो OBC से करूँ या जनरल, बिकॉज SABC सेंट्रल लेवल पे OBC में आना है आप। हाँ तो आप जब वो भरना तो आप उसको जनरल से भरना, जनरल से भरना कोई दिक्कत नहीं, जनरल से भर देना, जनरल से भर देना कोई दिक्कत नहीं, जनरल से भर देना कोई दिक्कत नहीं, जनरल से भर देना कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी फॉर डिस्टर्ब, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा ऐसा लग रहा है ना जैसे एक गला सूख रहा हो। गला सूखने का इन द सेंस जैसे कोई रोया हो, बहुत रोया हो और उसका गला सूख रहा हो, तो उस टाइप में गला सूख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये मेरे को भी नहीं पता है। मैं कंटिन्यूस आज दिन भर पानी पिया हूँ और पानी पी के निकाला बहुत है। तो SABC का क्या फ़ायदा यार, तुम दोनों से भर देना। तुम JEE के लिए फिर SABC करना पड़ेगा ना, JEE के लिए तुम्हें SABC करना पड़ेगा, JEE के लिए SABC करना पड़ेगा, ठीक है। JEE के लिए तुम्हें SABC करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप यार गूगल पे सर्च कर लो ना प्लीज़, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कैटेगरी के बारे में कम नॉलेज है। मैंने आपसे पहले कह दिया था, मुझे उसका याद था JEE वाले का, क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र में पढ़ा था तो वहाँ पे बच्चे ये चीज़ फेस कर रहे थे, तो मैंने बच्चों के मुँह से सुना हुआ था, बट CET का नहीं मुझे पता ठीक से। तो एक बार प्लीज़ यार, मेरी वजह से आपका करियर ना दांव पे लग जाए तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लो। पढ़ाई से रिलेटेड हो तो बता दूँगा आपको। तो मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल से हम कल करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कल टुमारो 9 PM, ओके। क्वेश्चंस ओके, क्वेश्चंस ओके। मेंस only मेंस लेवल, ओके, only मेंस लेवल। वी डिसाइड टुमारो, वी टेक अदर क्लास ऑफ मेंस लेवल क्वेश्चंस, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। जिस तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट है बनाए हुए हो, और हमारे लगभग 1300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, हमारे लगभग 1300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो जिस तरीके से आपने प्यार मोहब्बत से इस चैनल को खड़ा किया है, आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहें। जल्द से जल्द मैं कुछ ना कुछ करके कुछ नई चीज़ और लेके आऊँगा ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प हो, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड नाइट।